Good afternoon, everyone. Myself, Shailendra Kumar Mangalawat, Assistant Professor of Modern Institute of Pharmaceutical Science, Indore. Today, we discuss about respiratory volumes and capacities in the subject of human anatomy and physiology. Second, what is respiratory volume? Respiratory volume in the form of tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, and residual volume. Tidal volume (TV) equal to amount of air inhaled or exhaled with each breath under resting conditions. In the resting conditions, the amount of air in exhaled and or inhaled is formed with the tidal volume. IRV, inspiratory reserve volume, the amount of air that can be forcefully inhaled. It is known as forcefully inhaled after a normal TB inhalations. After normal TB inhalation, amount of air forcefully inhaled, it is a IRV, inspiratory reserve volume, and forcefully exhaled, it is a ERV, expiratory reserve volume. Both are comparison same. Inhalation is the IRV, exhalation is the ERV. Residual volume, it is the amount of air remaining in the lungs or after the forcefully expirations. Forcefully exhalation in condition amount of air remaining residues is type of residual volumes, such as measurements adult male average value and adult female average value. Tidal volume is a 500 ml and 500 ml, both are same. IRV, inspiratory reserve volume, it is a 3100 ml and 1900 ml. Respiratory reserve volume ERV is a 1200 ml is in male and 700 in female, and residual volume 1200 ml in male and 1100 ml in female. It is the terms of respiratory volumes. And respiratory capacities. Respiratory capacities is the maximum amount of capacities to exhale and inhale of the in lungs. The amount of air, such as inspiratory capacities IC, a maximum amount of air that can be inspired after a normal expiration. Normal expiration that can be inspired. Such as amount is the IC. IC equal to TV plus IRV. TV is a tidal volume, IRV is a inspiratory reserve volume. Functional residual capacity FRC. What is functional residual capacity? Volume of air remaining in the lungs after a normal tidal volume एक्सपायरेशन. नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेशन के बाद वहाँ वॉल्यूम जो लंग्स में बचा हुआ रहता है उसे बोलते हैं FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटीज. इट इज इक्वल टू ERV प्लस RV. ERV इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और RV इज रेसिडुअल वॉल्यूम. वाइटल कैपेसिटी VC. व्हाट इज VC? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर डेट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट इक्वल टू VC इक्वल टू TV प्लस IRV प्लस ERV. TV is a tidal volume, IRV is a inspiratory reserve volume, and expiratory reserve volume is called VC. Total lung capacity TLC, a maximum amount of air contained in lungs after a maximum inspiratory effort. It's called TLC. TLC equal to TV plus IRV plus ERV plus RV equal to TLC. TLC, maximum amount of air contained in lungs after a maximum inspiratory efforts. It is the measurements. Total lung capacity 6000 ml, 4200 ml in female, 6000 ml 100 in male. Vital VC 4800 ml in male and 3100 in female. Inspiratory capacity IC 3600 ml in male and 2400 ml in female. Functional residual capacity FRC 2400 ml in male and 1800 ml in female. It is a respiratory capacities. Dead space. Dead space, some inspired air never contributes to gas exchange. Two types, anatomical dead space and alveolar dead space. Anatomical is the volume of the conducting zone conduced. It is a 150 ml. It is a anatomical dead space. Alveolar is alveolar form. The alveolar sac is burst या obstruct is called alveolar dead space. Alveoli dead is to act in gas exchange due to collapse or obstructions. Total dead space, sum of above non-useful volumes.
टोटल डेड स्पेस इज नॉट फुल यूजफुल वॉल्यूम्स, इट्स कॉल्ड टोटल डेड स्पेस। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, किस टाइप से पल्मोनरी टेस्ट किया जाता है, सच एज स्पायरोमीटर्स, इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज इज कॉल्ड स्पायरोमीटर्स। व्हाट इज स्पायरोमीटर कैन डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन obstructive pulmonary disease, increased airway resistance such as bronchitis, and restrictive disorders, reduction in total lung capacity due to structural or functional lung changes. Example, fibrosis and TB, tuberculosis. It is a disease to distinction of the spirometer. स्पायरोमीटर द्वारा हम ये मालूम कर सकते हैं कि ब्रोंकाइटिस है या फाइब्रोसिस है या टीबी है, तो उस समय हम देख सकते हैं पल्मोनरी आपका कितना वर्क कर रहा हो। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किस हिसाब से हो सकता है, माइन्यूट वेंटिलेशन, टोटल अमाउंट ऑफ गैस फ्लो इनटू और आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना आउट इनटू और आउट हो रहा है, आपका गैस का एक्सचेंज कितना हो रहा है, उसे माइन्यूट वेंटिलेशन बोला जाता है, मिनट वेंटिलेशन। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी एफवीसी इज गैस फोर्सफुली एक्सपेल्ड आफ्टर टेकिंग डीप ब्रीथ, एक डीप ब्रीथ के बाद कितने फोर्सफुली हम गैस को एक्सपेल कर रहे हैं, जैसे एफईसी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ऐसे ही फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एफईवी, कितना अमाउंट आपका गैस का एक्सपेल कर रहे हैं ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम इंटरवल ऑफ द एफईसी, एफईसी के टाइम इंटरवल के बाद कितना अमाउंट गैस का हम